products. A very, very warm welcome to each one of you guys. We are yet into another stream where we talk so much. Guys, I love coming to the stream because there's so much that I actually like imparting my knowledge about. Every day is a new day, every day is a different day, and going through all these roller coaster rides with all you guys is something I am totally in love with it. So, how is everyone doing at Dubai, India, Nigeria, Africa? I don't know what are places you guys join from. I feel really happy to be able to cater to all you guys. My, like whenever I'm actually live, my intention is to make sure that I make these sessions, useful, fruitful for all you guys, so that something you should gain out of these sessions. I want you guys to basically learn something when you come here. So my whole intention is it's not about trade. It's not about it's not about making profits. It's not, of course profits is also my concern, but not at the cost of me telling you to do something, but at the cost of doing something on your own self. So what I recommend is you guys learn through this session, and just a sec, and also make sure that whatever decisions you make are based solely on your own research. I don't want you to just go. There are so many scammers out there. There are so many people out there in the industry and everywhere to scam you, to loot you, to take away all your hard earned money. But you can be aware, you can be self aware and self assured only when basically you are educating yourself, and that education is what we're trying to give you on this platform. So make sure that you learn everything that you need to learn in the world of crypto, so that you don't fall victim of any kind of scams or frauds that keep happening. Guys, our intention on this platform is to make sure you educate yourself. Please, 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 whatever decisions you make basis your trading strategies or things like that, that has to be always based on your own soul discretion, your own soul gut feeling, and your own soul decision making, and not based on somebody telling you to do something. So I have my community. I want you guys to join my community. I want you guys to join my Telegram community. I want you guys to join, the Zbit community, as well as all the places and platforms that basically can help you, um, increasing your education power. Just a sec. I'm going to log into my, because I have to send you guys the registration link. Let me log into the platform first. Yeah, here we go. Okay, the first and foremost thing which every person who is starting out in this industry asks me is about whether, is it good enough for all of us to start our journey on Zbit? Like, because what's hap- what happens is when you're starting out your journey for the first time in crypto industry, especially, you do not know where to begin with, and that's where we come into picture, and that's where we are here to basically, just a sec. Why am I not able to copy? Oh, yes, I'm able to. Yeah. Okay. I'm sending you in the chat. Oh, hi, Mati. I'm so glad to have you here. Here is my link to download the Zbit app. Here is the link to register yourself. My code is EZTVV. Please download this, app.
if you're not able to register, because this link does not work for iOS version, you need to have an Android phone to be able to download the app. Just in case you're using the website version of it, you need to use the registration link, and my code is EZTVV. Mati, I really welcome heartily to you. Appreciate you joining today once again. Really appreciate. You have been asking me for free crypto. This is the way to earn free crypto, Mati. You can earn free crypto by registering yourself and KYC yourself and deposit crypto into the wallet, and then you can start your crypto journey with us. Once you do that, you will be able to earn free crypto, enter into our lottery which is going on. And apart from that, I'm going to give you my my like, obviously I'm going to educate you guys, and also I'm going to give you various signals at various point in time to buy and sell. That will definitely, 5x, 10x, whatever, you're keeping your target as, that is what is going to multiply your money. So use my link to register, and I want you guys to share with me your phone numbers or anything, because I can add you on my Telegram community. I need you guys. Mati, if you can share your Telegram ID with me, I can add you to my Telegram community. I will be sharing useful information there, you know so that you can start your crypto journey with us, and I'm there at every point in time to basically, answer to all your questions. Guys, remember this: our offices are based out of Gold Souk, Dera. So anytime, even if you would like to meet us personally, like you want to come and see me personally, you're welcome to do so. You can meet me at Gold Souk. Our offices are at Gold Souk, so you can, sit with me personally, talk to me, and you can also take any kind of mentorship to be able to understand how the spot or the futures trading work and everything that you need to know about this industry. And then we can proceed with whatever you are looking for. So while I say, because I'm also in this industry past several months and years now, I can tell you that not every day is going to be a profitable day. If somebody tells you you're going to be profitable 100% every day of your life, that's a true lie. That's a true lie. Nobody is going to be ever profitable like 100% of the time or every day of your life, because there will be days where you will see some setbacks. You will see um, okay, sure, I'm going to add you. Just hold on, while you are online, I'm going to add you on my community. Just a sec. Let me see if I'm able to do that. I'm not sure if Telegram accepts uh, the email addresses, but if you have a phone number, also can help me. Um, just a sec. Let me check. I'm able to find you. Okay, I found one ID. I'm going to add you. So, Mati, I have sent you an email. Sorry, I've sent you a message in the group. I added you. So good to have you here. Okay. Yeah.
So, guys, you can expect by joining this community that you will be getting good amount of information. Like, when I'm live, I am actually talking about so many topics. As you all know, I talk about the crypto markets, I talk about the global financial markets and how they impact the overall markets as such. I want you guys to be acquainted with every small thing that could actually impact a decision. So when you are getting invested, when you're getting started out in this industry, there might be n number of questions that you might have, like when is market going to go up, when is market going to go down, when is the best time to enter the trade, when is the best time to exit the trade, what are my best indicators that I can use for taking successful trades, or what is the best platform that I can get on to start my crypto trade. These are some very very common questions, and I'm sure as a beginner trader even you have this questions out there. So the first and foremost thing, of course, you need to have one a legitimate platform that can solve all your issues, and Zbit is all that you have that you can get your spot and futures trading started. So we have we don't have the iOS version of it, we have the Android version of it. Download it with the application, the link that I've shared with you guys, that can be used to download the app only on the Android. We do not have an iOS version of it. You might see our iOS version of it very soon, maybe in a couple of months, but at the moment we do not have iOS version of it. So first and foremost thing, the first step that you need to do is download the app. Once you download the app, register yourself, KYC yourself, and then KYC is just one document, which is the passport, that is good enough to start your crypto journey. That is all that you need. Okay, second thing is, what you need is you also have to have you also have to have your money deposited into the wallet, and from there you can begin your crypto journey. So this is all that is required, and in order to start all of this, you can basically begin your journey with. Once you do that, uh, so once you do that, you can stand a chance to win free crypto. That is what you can do. Second thing is, you can of course 5x or 10x your free crypto by entering into spot or futures trading. So to guide you on spot and futures trading, I would want you guys to basically follow whatever we are discussing here. So what suits you best is what you're going to decide, what is good enough for you to start your crypto journey. So as a beginner trader, there will be a lot of setbacks in the starting, there will be a lot of problems in the starting, but I can assure that there will be so many things that will happen, which will kind of create a lot of issues in the starting. But don't worry, I am there at every step to guide you and to help you out in terms of when to buy and when to sell. But as usual, because I'm not a financial advisor or investment advisor, I request you guys to basically do your own research. Guys, whoever is joining the stream, I want you guys to basically share your Telegram IDs or your or your what do you call, maybe mobile numbers or whatever, whichever thing you are on. Like if in case you are on information desk, your information you have to share, like in the sense either mobile number or either your Telegram email address, both are okay, so that I can join you in the community. So if there are any buy or sell signals, I can let you know. But apart from that, what I request you guys is gain as much knowledge as you can, because you don't have to totally depend on me. If I say something, you better go back and do a bit of research on your own and then make the decision whether or not what I'm saying is accurate or not, and then you make the decision of entering or exiting. While I may give you guidance at every step, but the whole idea of whether you want to enter or not is totally your own discretion. Remember this, please remember this. Okay, now let's begin our day. Mati, thank you so much for sharing your email address. I have added you. So you'll continue to receive whatever information is required. And at the same time, guys, I want you guys to be a little interactive, because if in case you're not interactive, I can't really tell you, I can't really talk about things which you are looking forward to hear. If I'm talking something which
which of course I'm talking most of the time generic topics or topics which I'm picking it myself. So if in case you talk to me, I might know that if there is any specific question you have, there's specific doubt, or if there is any specific thing you want to ask me, then I will respond to you also. Like, you have any specific doubt that you want to ask, I will cater to that doubt, and I will respond immediately. So I want you guys to be interactive. That's how we can actually build rapport. And in case you want to come see me live, because you're seeing me live every time on the channel, you want to come see me personally also. Our offices are based out of Gold. So any day you feel like coming and joining me, coming and meeting me, feel free to do so, because I'm very much live here. I'm very much available in Dera, Gold Souk, and our offices are based out of Gold Souk. I'm repeating once again, we are very much available in Gold Souk, Dera. You can come see me personally also. You can meet me. I'll be happy to meet you personally, just in case you think you would like to meet me personally too. So moving on, Bitcoin at 113, 313, it is what it is trading at, 0.3% down. Ethereum has definitely surged. Yesterday when we started the stream, it was at around 4,100. I remember it has gone past like almost maybe 100 to $150 up. Up by 1.98%. BNB is trading at 850.49, 2.34% up. Then we have Solana, which is also up by 1.84%, trading at 183.82. XRP at 2.9019. It is also positive by 0.39%. So it's a mixed day where I don't know, most of the time when Bitcoin is basically positive and Bitcoin is doing well, then it might basically see the other one going up, the all the altcoin also following the rally. But here it is nothing. It doesn't show up that way. So this is the fear and greed index is standing at neutral. So people are very very balanced out in this particular zone. The market capitalization is standing at 3.84 trillion US dollars. Volume is trading at 171.58 billion. Wow, that's a massive number, isn't it? But this number is not massive at all, because crypto has seen something like $250, $250 billion also flowing into it. But definitely looking at the prices of Bitcoin, Ethereum, looks like there's an outflow that has definitely happened, which means after the major uptrend, like Bitcoin hitting the benchmark of 124 after making its all-time high, and Ethereum also making its all-time high around 4,700 or 800 is what I remember. I think after all major liquidations, the volumes have come down. We can definitely see it in the prices as well as in the volume itself. That speaks a lot. Let's look at the coin market cap index. Definitely, we're going to see what are the key drivers that are actually driving the crypto markets and the global financial markets. Of course, the markets are down, so we will see that. So almost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, almost close to 25 altcoins are following Bitcoin's footsteps. We can see they are all negative. Okay, so you can definitely see it in yourself here, and this is what is happening here. Okay, so all the others, they are in their own zones. They are all doing well. They are all positive, but 25 of them are on the footsteps of Bitcoin. So that's what is driving the markets. Let's see in detail what is driving these markets today. Okay, let's see. Bitcoin trading at around 113, 143, modestly down today. Ethereum is up by around 1.6 to 1.74%, currently near 4,200 something. Market highlights, obviously, to the total market capitalization, we have seen it's hovering around 3.8 to 3.9 trillion US dollars, reflecting flat to slightly positive movement over the last 24 hours. Bitcoin dominance is sitting at 57 to 58%, with stable coins making up about 7% of the total market. Data varying slightly across sources.
Cryptocurrencies, including XRP, Dogecoin, Ethereum, and Bitcoin, are rebounding from August lows and buoyed by the ETF activity, institutional demand, and a weakening US dollar. So, after taking all the profits, after all the institutional demand, after all the ETF activities, weakening of US dollars, we can see all of them are now in the pullback zone, in the consolidation phase, or in the rebounding phase. In fact, I can say, where they are going to see the surge again overall, maybe like once the market hype, like market demand develops. At the moment, whoever has taken the profits, they are all resting, and now I'm sure once they are satisfied with their appetite, they're going to again come back and jump into the markets, and that's what is going to take the markets for a great you know upward direction. So sentiments have cooled down. It's kind of sentiments have cooled down to neutral, with crypto greed and yeah, fear and greed index at 50, which is standing at neutral. We've seen it already. So institutional interest is remaining strong. Corporate treasuries are now holding over 4 million Ethereums, like 17.6 billion is what they hold, highlighting growing institutional accumulation. So if this accumulation is going to happen, we are going to see in Ethereum going further up. That's what is going to happen. So what do institutional interest signify to us? As retail investors, all of us are totally dependent on institutional investments. So because when they show interest, the prices tend to go up, and then they show no interest, that's when the prices tend to go down, and that's not very good news for all of us. So what are we actually hoping? We are hoping that more and more institutional interest goes up, so that we as retail investors kind of make a great amount of money. So analysts are noting a contraction likely triggered by profit taking after a month holder period, signaling potential short-term volatility. So, in recent past, all the cryptos have seen some major spikes. All of us have seen some major prices going up and down, not down, prices going up. So, after all that has happened, the rally that has happened, now the prices are definitely going down. So let's see in the accumulation phase, if there's a lot of buying and the demand is going to get met, then we will see the price again soaring back to the normal that it was actually. So in the options market, signs of reverse gamma squeeze suggest limited hedging in pockets of bearish sentiment, though not widespread. So you'll have to watch it out. Even the options market, like futures market, I'm sure a lot of you are not just spot traders, but you guys are also futures traders and options traders. So you guys want to keep tab on all of that as well. So guys, like I was mentioning yesterday, I'm going to reiterate, tomorrow is going to be, it's not tomorrow, I think today is 21st of August, right? So most probably by 1st of September, I'm going to start new series where we are going to cover the basics and everything about futures trading. So my sessions are going to be all about, they're going to be about like spot trading. They're also going to be about futures trading. So whatever you think you can do and whatever you think you can learn through these sessions, make sure that you're doing that. Okay. Just a sec. I'm going to open something here.
Okay, just a sec. Okay. So, on the regulatory front, I'm so sorry. Actually, I was, inviting people to join the community. Guys, I want you guys to share it with everyone who you think can benefit out of it. Let's make sure that we grow this community by, inviting other people too as well on this platform, because together, when you are basically in this, particular community, you're going to make a lot of money when you basically help others as well. So if you think you have made right decision of joining here, and you're learning something good, and anything that we're talking about is making any sense to you, then please, 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 please refer to the people. Also, please, I request you. I know some words in this particular industry are too difficult to understand. There are some jargons, there are some terminologies, there are some things which are too difficult to understand. I request each one of you, when you join these streams, to make sure to give any kind of feedback and stop me in the middle, anywhere you think. If you think I'm going too fast, or I'm talking too many jargons, I'm talking too much technical stuff which you're not able to understand, so make sure you basically stop me and ask me any kind of doubts that you have. I don't mind repeating it again and again, but as far as you are basically sharing it with me, I will know that you are following and you're not following. That is how it is going to be. Okay. Now moving on. All right. Let's begin. I'm going back to the markets, as I was talking about.
Finance bodies and trade associations are urging the Basel community, the Basel committee, right? The ones who basically decide on the rates, and so they are revisiting, or they're softening or soften upcoming crypto related bank standards. So the bank standards basically are being decided by the Basel community. So the finance bodies and the trade associations are urging that they should, whatever the upcoming crypto related standards are, they're trying to urge the Basel committee to revisit or soften the standards that are around the crypto markets or crypto related things. The US Genius Act, passed in July 2025, now allows banks and financial institutions to issue stable coins backed by fiat or treasuries. So this is what they are doing. So technology will continue to shape the space. Tokenization and blockchain integration, especially with projects like Tron and Kraken offering tokenized equities, are gaining momentum. So technology will continue to shape the space. The tokenization and blockchain integration, especially with projects like Tron and Kraken, will offer tokenized equities, are gaining momentum right now. Okay. The crypto market is in a cautious upswing, propelled by institutional demand and launching based optimism, but tempered by profit taking, neutral sentiment, and regulatory watchfulness. So, uh, yeah. The global financial markets, the morning trading has reflected a cautious tone. Asian markets have dipped, and European markets are navigating mixed currents, all influenced by Wall Street's sluggishness right now. Investors are bracing for Federal Reserve Chair Powell's speech at the Jackson Hole Symposium, seeking signals on monetary policy. So all of us are waiting for another, altogether the meeting that's going to be held for the rate cuts that are coming in near future. So all of us are waiting for all of that. Commodities and gold is seeing headlines. One prediction suggests gold could reach around $3,600 per per gram. I think Aussie is like 3,600 per. Just a second, let me just.
Guys, my request to all you guys is like, I know this platform is created for educating you guys. I want you guys to use decent language whenever you're interacting with me or you're talking in the community, because there are other people also in this community that are there, and I don't want any kind of indecency happening in the group, because of which it might cause any kind of issue to any other person. So please maintain that decorum and the kind of respect that we should have for each other, because all of us are coming in this particular community to learn as well as to make money. So please utilize this platform as much as you can to basically make money and not violate any kind of terms and conditions and basically cause any kind of inconvenience to anyone. So whenever you join any group or you join the live stream, you guys have to maintain the decency in language, because it's not acceptable at all. Okay. Yeah, just a sec. I'm going to add I'm going to send a post basically, today being 21st of August. Before I proceed, give me a second, guys. I'm actually trying to invite people. So today being 21st of August, please join my live stream so that you can get some good biocell signals. All right. So one of the very, very important thing which all of us actually come across is
So BlackRock basically, like I was talking about commodities and gold, like I told you, $3,600 is what it is looking at for per ounce to reach by year end and geopolitical and economic headwinds. BlackRock is recommending a shift in institutional portfolios and raising allocation to hedge funds, especially macro focused strategies, while trimming government bonds and equities, citing the elevated volatility and strategic opportunity. Broader trends point towards a new era of fiscal dominance where mounting debt burdens and borrowing costs may limit central banks' flexibility. So, financial markets will remain on edge, awaiting central bank cues, and commodities like gold shine amid unique uncertainty. At the moment, gold prices are already up and it will continue to rise. It's not going to go any down. So it's already very, very expensive at the moment. Fund managers pivot towards hedge fund for diversification. Broader macro trends suggest elevated fiscal constraints on monetary policy. So, all right, so let's begin again. Sorry. So to overall, basically talk about the markets right now, the crypto markets, it's in the recovery rebound, institutional accumulation. That's what is being seen. There's neutral sentiment across. There's regulatory pressure, and the global markets. There is cautious trading ahead of federal direction. Gold rally potential. Hedge fund basically rotation, fiscal pressure theme, that is what is actually impacting the overall global markets right now. So uh, this is about the overall market. Now, as you all know, the next 3 hours basically I talk about the Ethereum's technical analysis, whether or not if there's any buying or selling position for us, and then we'll also see some kind of information, the technical analysis on sweep. Okay, uh, I'll come back and talk about all of this, and let's see and let's talk about it after a small 5 to 10 minutes of break. Okay.
So guys, I'm back. Thank you so much for holding. Thank you so much for waiting. Okay. So, as you all know, whenever I do my session, I always tell you from the basics of everything because you might have missed out on certain aspects of it. We have almost covered all the basics of, spot trading and everything that we need to, cover. So the first and foremost thing what we need to do in order to start our crypto journey is obviously to understand if there's any platform that can help us in achieving that goal. And yes, Zbit is there very much to basically cater to all your requirements and to answer to all your questions. So if you were trading all this while on any other platform, maybe you were using, if you're in India or any other part of the world, you were using any other platform like CoinDCX, Delta Exchange, or WazirX, or maybe I don't know what all different crypto currency exchanges you were using, whether it was centralized, decentralized, Binance, OKX, Kraken. These are some major global, big, large organizations. So if you were using any of it, so let me tell you, let me reiterate, Zbit is very much live. Zbit is available on the Play Store. I have shared my registration link. If you are on Android phones, you can download the app directly. And if you are on the website version of it, the desktop version of it looks like this. You can use this. In the invitation code, you can use my code, which is EZTVV. This is my invite code. Use this to download the app and to register on the platform. And you can basically start your crypto journey. So I can see a comment in the comment section. There's a message from Shahid. He says, "Hi, how are you?" I am good, Shahid. How are you doing? आप कैसे हो? क्या कर रहे हो? कैसे चल रहा है आपका क्रिप्टो का जर्नी? Is everything going for good? शायद अगर आप टेलीग्राम पे हो तो आप टेलीग्राम का मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम पर हम बेसिकली बाई और सेल सिग्नल्स भी आपको दे सकते हैं और आपको मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन और मार्केट की सारी नॉलेज आपको देते हैं। गाइज मैं एक बात हमेशा क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि ये सेशन एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होते हैं। मेरी आस्क आप सबसे यही है क्योंकि मार्केट में बहुत स्कैम्स होते रहते हैं और फ्रॉड्स होते रहते हैं, तो आप अपनी रिसर्च करना ना भूलें और मेक श्योर कि यू आर एक्चुअली doing your own research before you get into any kind of products, because crypto markets में इतनी volatility होती है, इतने सारे अजीब अजीब नई नई चीज होती है every day of our lives. I don't want any of you, my guys, especially the people who belong to my community, आप लोग में से कोई भी किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना फेस करे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने खुद ही से अपने ट्रेड्स लिया करें। वाइल मैं एजुकेशन तो बेसिकली करती रहूंगी, मैं आपको एजुकेट तो करती रहूंगी, आपको मैं कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें वो सब तो बताती रहूंगी, लेकिन आपको खुद को भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स योर हार्ड एंड मनी, राइट? यू कैन जस्ट टोटली रिलाई लाइक आप कंप्लीटली किसी स्ट्रेंजर या कंप्लीटली किसी बंदे पर ब्लाइंडली तो ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट? तो प्लीज आप अपना रिसर्च खुद करें और अपना खुद का बेसिकली ट्रेड्स लेने की कोशिश करें, इंडिपेंडेंटली लेने की कोशिश करें। तो अभी मेरे साथ जो भी लाइव है लोग, अगर उसमें से आप सब में से कोई भी मुझे अपना टेलीग्राम का
ईमेल एड्रेस या आपका टेलीग्राम का क्या कहते हैं फ़ोन नंबर आप शेयर करना चाहते हो तो मेरे साथ चैट में शेयर करें, ताकि मैं अपने चैनल पे आपको ऐड कर सकूँ और वहाँ पर आपके साथ सारी मार्केट की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। और अगर कोई बाय या सेल सिग्नल्स होंगे तो भी मैं आपको जब भी मुझसे होगा मैं आप सबको देती रहूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये ज़ीबिट का डेस्कटॉप वर्ज़न है। इस पर आपको जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, आपको यहाँ पर स्पॉट मार्केट दिखेगी, यहाँ पर फ्यूचर मार्केट दिखेगी। मार्केट में हमारे यहाँ स्पॉट में 32 पेयर्स ऑफ स्पॉट ट्रेडिंग है। फ्यूचर्स में हमारे यहाँ 101 पेयर्स है। तो चाहे आप स्पॉट ट्रेडिंग करते होंगे या फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते होंगे, दोनों में बेसिकली आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। आप जैसे कि ज़ीबिट को जानते ही हैं, हमारा बेसिकली प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च होकर 2 या 3 महीने हो रहा है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल एंड न्यू बॉर्न बेबी जो बेसिकली अभी स्लोली डेवलप हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सारे के सारे फीचर्स पे इसको एक्वेंटेड हो जाएँ कि क्या-क्या इसमें अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है। जस्ट अ सेक। एक सेकंड। ओके, ओके। अम Guys, whoever I am going to join you guys on the community, I request each one of you कि जब आप community join करें, maintain the decency of language because there are a lot of other people who are joining this community with the hope that they will learn and educate themselves. So I want you guys to maintain good language. You cannot talk however you like. You cannot use offensive language in the community. So maintain that while you are in the community. While you are free to ask any kind of questions, doubts or anything that you have, आप basically मुझसे कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज पर थोड़ा-सा ध्यान दें और आप जिस भी किस्म की लैंग्वेज चाहें वो आप यहाँ पर नहीं बात कर सकते। If I see anyone using any kind of offensive language or any kind of wrong language तो मैं आपको
सारे के सारे प्लेटफॉर्म के एरिया से आपको मैं रिमूव कर दूंगी एंड आई विल बी ब्लॉकिंग यू फ्रॉम एवरीवेयर. सो आई वांट यू गाइस टू मेंटेन डिसेंसी ऑफ लैंग्वेज इन माय चैट रूम. चाहे वो चैट में हो, चाहे लाइव जब मैं लाइव स्ट्रीम में हूँ, या चाहे आप मुझसे कम्युनिटी में, टेलीग्राम कम्युनिटी में आप जब मुझसे बात करेंगे, आई वांट यू गाइस टू मेंटेन दैट डिसेंसी. ओके, होप दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, ताकि हम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह, एक हैप्पी फ्रेंड्स की तरह वी शेयर द बेस्टेस्ट ऑफ द नॉलेज, ताकि हम बेसिकली टुगेदर वी कैन लर्न, ग्रो, एज वेल एज वी कैन एजुकेट ईच अदर, एज वेल एज मेक श्योर कि हम गुड अमाउंट ऑफ मनी बना सके. ओके, मूविंग ऑन. जैसे कि मैं आज की मार्केट के बारे में थोड़ा सा बता रही थी, मार्केट की तो आपने इंफॉर्मेशन ले ली. आप देख सकते हो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, डोज सब लोग किधर है. ये हमारा जीबिट का प्लेटफॉर्म है. स्पॉट फ्यूचर्स आपके पास अभी अवेलेबल है. रिपोर्ट्स में आप जाओगे, जिन जिन लोगों को अगर फ्री क्रिप्टो कमानी होगी और उस क्रिप्टो को आप बेसिकली 5x या 100x करना चाहते हो, तो दिस इज वेयर यू कैन एंटर द लॉटरी. जैसे ही आप लॉटरी में एंटर करोगे, आपको फ्री क्रिप्टो मिलने के चांसेस होंगे. और जब आप अपने आप को केवाईसी रजिस्टर कर लोगे और डिपॉजिट करोगे, तो बेसिकली यू विल स्टैंड द चांस टू 5x और 100x योर इनकम, and that is possible by entering into spot or futures trading. So this is what Zebit has to offer, and this is how our market लुक्स. मैं आपको एक बार इसका पूरा सेटअप समझा देती हूँ. लेफ्ट पे आपको यहाँ पर सारे के सारे ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन नजर आता है. यहाँ पर आपको चार्ट्स नजर आते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस नजर आते हैं, जो भी किस्म का आप चार्ट यूज करना चाहते हैं. यहाँ पे आप अपने चार्ट और फीचर्स को और आपके सारे सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं. अगर आपको ट्रेडिंग पेयर को चेंज करना हो, तो आप इन सारी चीजों में जाके अपने ट्रेडिंग पेयर्स को चेंज कर सकते हैं. और इधर आप सारे के सारे बेसिकली इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि इधर आपको टाइम फ्रेम्स मिल जाएंगे, इधर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न, इधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड अदर फीचर्स मिल जाएंगे. यहाँ राइट साइड पे आपको ऑर्डर बुक मिलेगी. तो जहाँ पे बाई सेल आपको नजर आता है, रेड में जो आपको सारे के सारे ट्रेड्स नजर आ रहे हैं वो सारे सेल ऑर्डर्स हैं, एंड ग्रीन में जो आपको ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे ग्रीन बाई ऑर्डर्स हैं. तो जिस भी इंडिकेटर का आपको इस्तेमाल करना हो, यहाँ से रिमूव या आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं. इसी तरीके से आप रिमूव करेंगे और फिर आप यहाँ पर जाएंगे, जो कि इधर ऑप्शन में, तो फिर यहाँ पे आप अपना इंडिकेटर वापस से डाल सकते हैं. ये सारे फीचर्स हो गए. स्पॉट में बहुत सिंपल सी चीजें होती है. बाई का ऑप्शन होता है, सेल का ऑप्शन होता है, लिमिट ऑर्डर होता है, मार्केट ऑर्डर होता है. लिमिट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जो बेसिकली अगर आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो, जहां पर के प्राइस या तो फर्दर नीचे जाएगा, तब आप इसकी खरीदारी करोगे तो लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. नहीं, अगर आपको फिलहाल जिस प्राइस पे क्रिप्टो चल रही है उस प्राइस पर अगर आपको खरीदना हो, तो वो मार्केट ऑर्डर हो गया. और अभी के अभी जो भी प्राइस लाइव चल रहा होगा, आप उस पर अपनी बाइंग कर सकते हो. सेम गोज विथ सेलिंग. सेलिंग में भी सेम आइडियोलॉजीज होते हैं. या तो लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जहां पे बेसिकली आपने एक टारगेट सेट किया कि मुझे 500 पॉइंट्स के बाद अपना प्रॉफिट लेना, या 250 पॉइंट्स के बाद, या 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, वो तो टोटली आपकी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है. आप अपना प्रॉफिट टारगेट सेट कर सकते हो. और अगर इन केस आपको लिमिट ऑर्डर नहीं प्लेस करना है और अभी राइट नाउ जो भी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस पर आपको सेल करना हो, तो आप वो भी प्राइस पर सेल करके मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं. तो ये बहुत सिंपल से टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, लाइक टर्मिनोलॉजीज हो गए अबाउट क्रिप्टो, जो स्पॉट ट्रेडिंग से रिलेटेड है. फ्यूचर्स ट्रेडिंग के मैं कोर्सेस और या जो भी एनालिसिस कहो, वो मैं बेसिकली सितंबर के महीने से स्टार्ट करूंगी. अभी फिलहाल स्पॉट ट्रेडिंग में आपको जो जो जानना जरूरी है वो सारी चीजें जान लें. अगर आपने कोई भी आपको बेसिकली डाउट हो राइट नाउ कि आपको किस क्रिप्टो करेंसी से अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए, लाइव क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जाइए. ये जो बेसिकली कॉइन मार्केट कैप एक बहुत रिलायबल रिसोर्स है.
इस पर जो भी टॉप 5 आपको क्रिप्टो नजर आ रहे हैं, दीज आर गुड इनफ टू स्टार्ट योर क्रिप्टो जर्नी। अगर एक बिगनर ट्रेडर हो, आपको 10,000 कॉइन्स लेकर आपको अपनी वॉलेट में डालने की जरूरत नहीं है। वन क्रिप्टो करेंसी इज बेसिकली गुड इनफ टू स्टार्ट योर क्रिप्टो जर्नी। एक क्रिप्टो से आप अपना प्रॉफिट और लॉस बनाना शुरू कर सकते हैं। इथीरियम पिकअप कर लीजिए, बीएनबी पिक कर लीजिए, सोलाना पिक कर लीजिए, एक्सआरपी कोई भी पिकअप कर लीजिए, आप बेसिकली अपना क्रिप्टो करेंसी की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज हाउ इट इज। एंड हाँ, मूविंग ऑन, और क्या मुझे बताना है? ट्रेडिंग पेयर के बारे में तो हो गया। दूसरी चीज है कि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जीबिट आपको सारे फीचर्स दे रहा है। जीबिट पे इतनी ट्रेडिंग फीस इतनी कम है, बेसिकली 0.1 इज व्हाट वी चार्ज फॉर आवर टेकर एंड मेकर फीस। तो स्पॉट ट्रेडिंग की इतनी कम फीस है हमारी। और अदर देन दैट, अगर मैं बेसिकली जस्ट अ सेक, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुकिए गाइस। और अगर मैं परपेचुअल्स या फ्यूचर्स की बात करूं, तो टेकर फीस 0.05% है और मेकर फीस बेसिकली 0.02% है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। काफी सस्ता और काफी लाइक इट इज वेरी वेरी चीप बेसिकली। आपको जस्ट अ सेक, टेकर और मेकर फीस भी बहुत चीप है। एंड बिकॉज वी आर लाइसेंस्ड अंडर वी आर लाइसेंस्ड अंडर एफएससीए, अंडर साउथ अफ्रीकन लॉज। तो बेसिकली आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आपका पैसा सेफ ना हो, या पैसा आपका कहीं गलत जगह पे हो। पैसा आपका बहुत सेफ है। पैसा आपका बहुत ज्यादा हैज हैज बेसिकली नथिंग, लाइक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज 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 आप लोग इस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से इस्तेमाल करें। हमारी 24/7 कस्टमर सर्विस टीम आपके सर्विस में बैठी है। ऐप पे आप राइट कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर पे जाओगे तो आप एक जो हेडसेट का एक वो देख रहे हो, आइकॉन देख रहे हो, उस पर आप क्लिक करोगे तो यू विल बी एबल टू बेसिकली find the customer service details where you can talk to the customer services। and also अगर इन केस आपको कोई ग्रीवेंस होता है, कोई आपको प्रॉब्लम होती है, आपको कोई भी किस्म की इशू हो, तो बेसिकली यू कैन रीच आउट टू माय कस्टमर सर्विस टीम। अगर आपको स्पॉट ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करना हो, तो our live stream team is sitting 4 hours every day. Some days we are live for 8 hours also, between 12 to 8 p.m. Dubai time. So you can catch us live and ask any kind of questions. So all that support which you need is very much available on this platform. So please do like, subscribe and also follow, and also basically make sure कि आप हमारे सारे के सारे प्लेटफॉर्म को अभी के अभी लाइक और उन सबके साथ भी शेयर करें जो बेसिकली आपको कैन गेन बेनिफिट आउट ऑफ दिस। तो प्लीज मूविंग ऑन, अभी लेट्स मूव। फर्स्ट दो चीज मैंने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, मैंने ट्रेडिंग वेयर के बारे में आपको बोल दिया। अब थर्ड चीज जो आती है कि जो सवाल सबके दिमाग में होता है और जो सवाल सबको होता है कि क्या ये समय करेक्ट है मार्केट में एंटर होने का, या ये मार्केट से एग्जिट लेने का टाइम है। तो जब भी आप मार्केट में सारे के सारे क्रिप्टोस को पॉजिटिव में देखो, तो बेटर है कि अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग दो सेशंस बिकॉज दे आर ऑलरेडी एट इट्स हाई। But what you really need to understand is go and do a bit of research, at least for कम से कम एक एक साल का आपने थोड़ा सा डेटा उठा के देखना है, मंथली डेटा उठा के देखना है, जहां पे आपको देखना है कि उसने ऑल टाइम हाई क्या बनाया था, उसका ऑल टाइम हाई क्या था, उसका ऑल टाइम लो क्या था। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पेज पे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं इथेरियम को ओपन करती हूँ, तो आप यहाँ पर जब आएंगे, आप नीचे जब इसको स्क्रॉल करेंगे, तो आपको यहाँ पर इसका 24 आवर्स का लो और हाई यही नजर आ जाएगा। अगर आपको 1 मंथ का इसका डेटा देखना हो, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3357 इसका लो था
विच इज 30 डेज लो, एंड इसका हाई 4788 तक गया था लास्ट मंथ। और अगर आपको 1 ईयर का लो या हाई देखना हो तो सबसे लोवेस्ट ये 1386 पर गया था और हाईएस्ट इसने 4788 को छुआ था। तो ये लो और हाई जानना काफी जरूरी है टू डिटरमाइन कि हम कोई ओवर वैल्यूड प्राइस पे तो नहीं खरीद रहे हैं। अब ओवर वैल्यूड प्राइस क्या है, आप मुझसे ये पूछोगे। ओवर वैल्यूड प्राइस ये होता है कि अगर क्रिप्टो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड लेवल पे पहुंच गई, यानी वो बहुत ज्यादा हाइप होकर ओवर यूटिलाइज्ड पोजीशन पर पहुंच गई है, तो बेसिकली वहां पर अगर आप खरीदोगे तो चांसेस होंगे कि आपको लॉसेस होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पीक पर चढ़ चुकी है। 4788 इज व्हाट इथेरियम इज राइट, इज हाई दैट इट हैज मेड इन दिस ईयर। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि इथेरियम इज समवेयर अराउंड 4800 या 4900 के आसपास है, तो वो ऑलरेडी हाई पे चल रही है। तो ऐसे में एज अ रिटेल इन्वेस्टर, यस आई विल अग्री, अगर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन बीइंग because they are the drivers of the market, they drive the prices of the market, so we don't need to bother about them, because they are the ones who can influence the prices crazily. They are the whales of the market, they will influence. But as retail investors or traders, if you enter into a trade when the crypto has already reached its high, you're going to make a loss, because you always have to trade in the direction of trend, and you also have to trade in the direction of whales। जहां जहां इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होगी, जहां जहां इंस्टीट्यूशनल बाइंग होगी, उसी ट्रेंड में आप भी बाय करोगे तो आपका प्रॉफिट होना है। और अगर आप उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रेड करोगे तो यू विल बी एट लॉसेस। एंड एज अ बिगनर ट्रेडर, नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस, एंड सब लोग यही गलती करते हैं। मार्केट में हाइप होती रहती है, एक दूसरे को बोलते हैं कि यार ये इतना प्राइस पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया, वो उधर पहुंच गया, ये हो गया, वो हो गया। लोग खरीदने लग जाते हैं जब ऑलरेडी वो प्राइस पे ऊंचा पहुंच गया है। और वही गलती होती है जहां पे बेसिकली आपने हाँ बहुत महंगे प्राइस पर खरीद लिया। इसको आसान करने के लिए मैंने एक इजी सा फॉर्मूला बनाया है, जो बेसिकली ये है कि आपको जाकर उसमें अपना, जैसे आप स्टॉक ट्रेडिंग में बेसिकली यू फाइंड आउट द पीई रेशियो, राइट, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जिससे आपको स्टॉक की फेयर वैल्यू का अंदाजा लगता है। तो उसी तरीके से क्रिप्टो में आपको अगर कोई क्रिप्टो फेयर वैल्यू पर है या बेसिकली कोई अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है करके पता करना हो, तो आपको उसका नेटवर्क वैल्यू टू ट्रांजैक्शन रेशियो मालूम करना होगा। एनवीटी इज अ वेरी वेरी गुड tool to find out if that particular crypto is actually trading at fair value, under value or over value। अगर ये तीन चीजें आप मालूम कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि एट दिस स्टेज, जब यहाँ पर राइट नाउ फॉर एग्जांपल जैसे इथेरियम अभी 4284 पर चल रहा है, तो आपके लिए मार्केट में एंटर होना या नहीं होना इज अ गुड चॉइस और नॉट। मैं आपको अभी लाइव उसकी कैलकुलेशन करके बताती हूँ कैलकुलेटर में। लेट मी गो। अभी देखो, जैसे कि अभी 4283 इसका प्राइस चल रहा है, तो नेटवर्क वैल्यू ट्रांजैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम विच इट इज ट्रेडिंग इन द मार्केट इन द 24 आवर्स। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एज यू कैन सी इथेरियम का है 516 887। ये हर एक सेकंड को चेंज होता है, तो गाइज डोंट वरी, हम मोस्ट एक्यूरेट मोस्ट क्लोज नंबर को लेने की कोशिश करेंगे। ओके ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसको डिवाइड करते हैं हम 44,092,429,002। ओके तो आप देख सकते हो कि इसका नेटवर्क वैल्यू टू ट्रांजैक्शन है 11.722, यानी नेटवर्क वैल्यू टू ट्रांजैक्शन इज इन द रेंज ऑफ 0 to 20। अभी नेटवर्क वैल्यू टू ट्रांजैक्शन का जो 0 to 20 का रेंज होता है वो अंडर वैल्यू का रेंज होता है। 20 से 50 के बीच में अगर आपको इसका आंसर आता होता
तो वो बेसिकली फेयर वैल्यू कहलाता। और अगर ये 50 के अबव होता हुआ नजर आता तो आपको पता होता कि ये बेसिकली ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड सिचुएशन में हमें कभी नहीं खरीदना है। आप खरीदारी कर सकते हैं जब जब बेसिकली या तो वो फेयर वैल्यू पर हो या फिर वो अंडर वैल्यू पर हो। तो फेयर वैल्यू पर आपने खरीदना है। अगर फेयर वैल्यू पे भी नहीं खरीदना तो इट्स ओके, यू कैन वेट टिल इट गोज अंडर वैल्यू एंड देन यू कैन बाई। बट फेयर वैल्यू पर स्टिल आप खरीदारी खरीद कर सकते हो। अगर वो ओवर वैल्यूड पर ऑलरेडी पहुंच चुका है तो बेटर है कि उसको अवॉइड करें एंड डोंट गेट कैरिड इनटू बाइंग दैट and avoid buying when it is overvalued, okay, because at that point in time losses होने के probability बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ बेसिक्स है आपको जो स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में जानना काफी जरूरी है। वंस यू नो दिस देन यू नो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। गाइस, अगर आप में से कोई भी लाइव हो और मैं जो भी बातें कर रही हूँ इनमें से आपको कोई भी चीजें समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे कहीं भी स्टॉप कर सकते हो और आप मुझसे कोई भी सवाल जवाब कर सकते हो। आई एम रेडी टू आंसर टू एनी ऑफ योर क्वेश्चंस एंड इफ एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क मी, तो मेक श्योर करें कि आप इसमें जस्ट अ सेक गाइस। ओके, ओके। हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो एज अ बिगनर ट्रेडर। तो अगर आपको कहीं पर भी जब भी मैं भी बात कर रही हूँ अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे स्टॉप करके आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई कम्युनिटी। गाइज, आई टोल्ड यू कि आप मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आप लोग के साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी।
Okay, moving on. So with these calculations, we are sure that we can buy Ethereum. It is still in the undervalued framework, so it can still be bought. So overhyped नहीं है या overvalued नहीं है, तो we can still buy this. Now let's move on. Once we start our spot trading, what are the important things that you need to know, and what are the important things that you need, or the tools or the indicators that you need in order to analyze it, when to enter and when to exit. मैंने बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी रखी है अपने आप के लिए, और मेरा फंडा बहुत सिंपल सा है. एक 2 या 3 इंडिकेटर्स आर गुड इनफ टू अंडरस्टैंड कि कब बाय करना है और कब सेल सिग्नल कब सेल करना है. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरे पास फिलहाल एक 5 मिनट्स का चार्ट चल रहा है, और बेसिकली मेरे चार्ट पर आप देख सकते हो कि इस पर मैंने 2 ही इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, जो कि एक है लीनियर रिग्रेशन का इंडिकेटर और दूसरा है RSI. मैं एक के बाद एक दोनों इंडिकेटर्स के बारे में बात करूंगी और उनकी सिग्निफिकेंस आप सबको एक्सप्लेन करूंगी. इसको अंडरस्टैंड कर ले बहुत अच्छी तरीके से, सो दैट यू नो व्हाट इज दिस इंडिकेटर ऑल अबाउट. So whenever you are taking a trade, you should have certain things in mind before you proceed. तो ये basically आपको help करेंगे to take a right kind of decision. So on the linear regression indicator which you see right now, there are two bands that you're seeing, upper band and the lower band. एक आपको बीच से मिडिल से एक लाइन जाती हुई नजर आ रही है. जो रेड लाइन जो बीच से नजर हो रही है जाते हुए, दैट इज योर लीनियर रिग्रेशन चैनल लाइन. That is indicating the slope of the price, which means that where the price is heading, yani it is in the downward direction, means the price is in downtrend. Okay, the upper band is your resistance band and the lower band is your is basically your support band. And ये बेसिकली जो लीनियर रिग्रेशन की जो बीच की लाइन है, उससे बेसिकली इट्स एट अ डिविएशन ऑफ 2 points. It's at a standard deviation of 2 points here, and you can see these settings here. यहाँ पर जब आप अपने सेटिंग्स खोलोगे, ये जो 100 आपको यहाँ पर लेंथ में नजर आ रहा है, ये 100 कैंडल्स को कवर कर रहा है, 100 पीरियड को कवर कर रहा है. यानी चाहे आप वो 5 मिनट्स का चार्ट लगाओ, 15 का लगाओ, 30 का लगाओ, 1 आवर, 4 आवर्स, व्हाटएवर, यहाँ 100 का जो कैंडल लगा हुआ है, ये 100 कैंडल्स को रेफर कर रहा है, 100 पीरियड को रेफर कर रहा है. आप देख सकते हो ये जो ब्लू लाइन है, ये अपर डिविएशन ऑफ बेसिकली 2 पॉइंट्स पे ये बनाई गई है, और ये नीचे की लाइन भी 2 पर ही बनाई गई है. इसको चाहे तो आप बेसिकली इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो, बट मोस्टली 2 इज गुड इनफ एज अ नंबर, क्योंकि प्राइस उससे ज्यादा मोस्टली अप एंड डाउन होने की कोशिश नहीं करता है. और अगर कोशिश कर भी ले, तो ये लीनियर रिग्रेशन का इंडिकेटर अपने आप से ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है, जिससे बेसिकली आपको ट्रेंड का पता लग जाता है. तो दिस इज व्हाट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इंडिकेटर. मैं बेसिकली अपने मैनुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को उतारना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि बेसिकली उससे मैंने मैनुअली उसको टोटली अवॉइड कर दिया, बिकॉज दिस ब्यूटीफुल इंडिकेटर गिव्स मी ऑल द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए फॉर नोइंग माई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो जब भी आप अपर बैंड पर, जब रेजिस्टेंस लेवल पर आप प्राइस को जाते हुए देखो, तो वो आपकी शॉर्ट या सेल की पोजीशन होती है. और अगर आप प्राइस को सपोर्ट लेवल पे या लोअर बैंड की तरफ देखो, तो वहां पर आपकी बाई या लॉन्ग पोजीशन होती है. तो this is good enough to take any kind of trade. Now one thing which matters a lot is also understanding कि कभी कभी linear regression पे शायद आपको maybe it might reach the support level, but दूसरे वाले indicators पर शायद आपने देखा होगा कि वो अभी exhaustion level पर नहीं पहुंचा हो. तो ऐसे में
हम कैसे डिसाइड करें कि इस जोन पे खरीदना है या हमको सपोर्ट के नीचे खरीदना है, समथिंग दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई। तो देर आर टू थिंग्स टू इट। अगर आप लिक्विडिटी स्वीप का शिकार होना नहीं चाहते, विच मीन्स यू डोंट वांट द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर स्टॉप ऑर्डर्स, then you better avoid buying at the support level, because that's where the most of liquidity sweeps happen. It will basically take away all your stop losses, and the big investors basically will make profits at that level. अगर आपने एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपने अगर कोई ट्रेड लेना हो, तो योर ट्रेड शुड बी समवेयर बिलो द यू नो सपोर्ट लेवल। पर अगेन, जब ये यहाँ पर होगा, आपने उसको क्रॉस वेरीफाई करना है विद आरएसआई टू सी कि वो ओवर सोल्ड या ओवरबॉट जोन में तो नहीं है। अब आप ये पूछोगे कि आरएसआई, ये आरएसआई है क्या? RSI is another indicator which clearly mentions, which clearly shows कि कोई भी कमोडिटी, कोई भी क्रिप्टो वेदर एग्जॉशन लेवल पर ओवरबॉट तो नहीं हो गई है या ओवरसोल्ड नहीं हो गई है। सो इन दैट सिनेरियो ये बेसिकली आरएसआई एक 0 to 100 के स्केल पे चलता है। जब भी आप प्राइस को देखोगे, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, आई एम गोइंग टू गो इनटू इट्स सेटिंग एंड रिमूव दिस येलो लाइन, क्योंकि वो मूविंग एवरेजेस की लाइन है, हमें मूविंग एवरेजेस की लाइन नहीं चाहिए, तो मैं उसको रिमूव कर देती हूँ। हमारे लिए सिर्फ ये पर्पल लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख सकते हो कि लाइन इज नियर 48.44, यानी ये न्यूट्रल जोन में चल रही है। जो मिड लाइन आपको दिख रही है 50 का जो जोन होता है, ये न्यूट्रल जोन होता है। प्राइस अगर इस जोन में होता है, जो 50 के अबव होता है, तो बुलिश टेरिटरी में होता है, और प्राइस अगर 50 के नीचे होता है तो बेरिश टेरिटरी में होता है। और अगर आपने देखा कि प्राइस बेसिकली नीचे पहुंचते पहुंचते ये बेसिकली 30 के स्केल के नीचे चला गया है, दैट इज वेयर योर ओवर एग्जॉशन लेवल इज, यानी प्राइस सेल होते होते ओवरसोल्ड वाली जोन में आ गया है एंड बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, जिसकी वजह से अभी प्राइस रिवर्स होने के चांसेस काफी बन जाते हैं, और दैट इज वेयर योर एंट्री पॉइंट कुड बी फॉर लॉन्ग पोजीशंस। अगर आपने देखा कि बेसिकली आरएसआई पे द प्राइस हैज रीच 70 एंड अबव, जिसके बेसिकली इट कैन रीच अप टू 100, 70 to 100 के बीच में काफी पीरियड है, लाइक काफी 30 पॉइंट्स का अभी स्टिल मार्जिन है, और बेसिकली 30 एंड बिलो के नीचे भी 30 पॉइंट्स का आपको बेसिकली गैप है। तो यू कैन वेट अंटिल इट रीचेस द एग्जॉशन लेवल। कोई कोई लोग होते हैं जो 30 के जैसे ही बिलो जाता है खरीद लेते हैं। कभी कभी 30 के बिलो जाने के बाद भी प्राइस काफी बहुत नीचे जाता है, यानी 15, 10 के नीचे भी चला जाता है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पे, किस लेवल पे, किस मेजरमेंट पर आप अपना लेते हो। बट आइडियली कोई भी ट्रेडर के लिए 30 बिलो एंड 70 अबव इज गुड इनफ फॉर बाई और सेल। तो ये दो इंडिकेटर्स आर गुड इनफ टू टेक एनी काइंड ऑफ सक्सेसफुल ट्रेड। अगर ये सारी चीजें आपको समझ आ रही हो और समझ आ गई हो, तो प्लीज प्लीज, अगर एनीथिंग दैट इज मेकिंग सेंस टू यू, प्लीज डू शेयर इट विथ एवरीवन हु यू थिंक कैन बेनिफिट आउट ऑफ दिस। एंड आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस। Just a sec. ओके, अभी जैसे कि आप देख सकते हो लीनियर रिग्रेशन का 100 पीरियड का कैंडल चल रहा है।
इथेरियम के हम 5 मिनट्स के चार्ट पर हैं। ऑन द RSI it is near the neutral zone, which means there is no buy or sell at the moment. यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन में भी बेसिकली ये मिड लाइन को, रिग्रेशन लाइन को टच कर रहा है। प्राइस बेसिकली यहाँ से वापस से बाउंस करेगा या बेसिकली प्राइस इसके फर्दर नीचे जाएगा। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है, तो बेसिकली ट्रेड इस समय पे लेना काइंड ऑफ रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रेड लोगे तो प्राइस अगर यहाँ से फर्दर नीचे चला जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपके पैसे फंसने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो बेटर होगा कि whenever you see that the price either on the RSI or on linear regression is near the mid line, यहाँ पर ये जो न्यूट्रल लाइन हो गई और ये रिग्रेशन वाली लाइन हो गई, इस पर ट्रेड लेना अवॉइड करें। वेट ईदर टिल इट टचेस सपोर्ट और सरपासेस द सपोर्ट लेवल, और वेट अंटिल इट बेसिकली रीचेस द एग्जॉशन लेवल, जो RSI पे 30 एंड बिलो जब वो चला जाएगा तब दैट इज योर बेसिकली बाय और लॉन्ग पोजीशन। तो आई थिंक दिस इज गुड इनफ एज अ बिगनर ट्रेडर। आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ रही होगी, और दिस इज व्हाट यू डू। the same thing goes on this you know other जैसे जो रूल्स मैं आपको बता रही हूँ, it's not basically applicable to just that crypto, it is universal rule। अगर वो सेम रूल हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं लेना है। अभी सुई पर मैंने सेम लीनियर रिग्रेशन इंडिकेटर लगाया है, लेकिन मैंने इसके कॉम्बिनेशन में इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए एक दूसरा इंडिकेटर लगाया है जिसका नाम है डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, जो बेसिकली ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। कौन सा ट्रेंड है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, बट इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन हाउ स्ट्रॉन्ग दैट ट्रेंड इज। सो यू कैन सी बिलो हियर इन दिस जोन, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिकली इधर 3 लाइंस नजर आ रही होंगी आपको। दीज 3 लाइंस हैव डिफरेंट सिग्निफिकेंस, हैव डिफरेंट मीनिंग्स। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। दिस ब्लू लाइन विच यू सी हियर is the DI plus line. Okay, the red orange line that you see here is the DI minus line, and the red line which you see here is the is the ADX line, which is average directional index line. So ADX basically talks about how strong the strength of the ट्रेंड इज। जैसे कि आप देख सकते हो 28.5489 ये बता रहा है। अगर ये तीनों लाइन अगर आपको 25 एंड अबव नजर आएगी तो यू कैन अज्यूम दैट द ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग, द बाइंग प्रेशर इज स्ट्रॉन्ग, द सेलिंग प्रेशर इज स्ट्रॉन्ग। जो ब्लू लाइन हमको इंडिकेट करे दैट इज योर बाइंग प्रेशर। सो राइट नाउ यू कैन सी 11.65 सॉरी 14.65 हो गई है अभी, तो जैसे कि प्राइस बढ़ रहा है तो जैसे ही लाइन ये स्ट्रॉन्ग होती हुई अगर 25 के अबव चली जाएगी तो यू कैन अज्यूम दैट द ट्रेंड, द बाइंग प्रेशर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर ये 25 के नीचे रहती है तो बाइंग प्रेशर इज स्टिल वीक। जैसे येलो आप देख सकते हो इज एट 21, it's not even, it is also not above 25, तो you can still say के बाइंग एंड सेलिंग ऑलमोस्ट ऑन पार है, यानी एक्यूमुलेशन फेज में चल रहे हैं, यानी दोनों बाइंग और सेलिंग एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर बायर्स आर ट्राइंग टू ओवरपावर द सेलर्स एंड सेलर्स आर ट्राइंग टू ओवरपावर, पर कोई भी इनमें से स्ट्रॉन्ग हो नहीं पा रहा है। अगर कोई भी इसमें से स्ट्रॉन्ग होगा तो वन ऑफ द लाइंस, either the blue line or the orange line, you'll see it going up above 25, and right now both of them are not above 25, which means both of them are just fighting for the power right now। आप ट्रेंड देख सकते हो एज पर द 100 कैंडल, अगर मैं इसको देखूं तो ये बेसिकली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ये बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो बेसिकली एट 27 पे चल रहा है, यानी 25 अबव है। तो इसका मतलब क्लियरली यही है कि ये ट्रेंड अभी स्ट्रॉन्ग है एंड द अप ट्रेंड हैज नॉट येट फॉर्म। तो बेसिकली जब ये अप ट्रेंड में जाएगा
तो भी उसको 25 के अबव होना होगा। अगर ये डाउन ट्रेंड में होगा तभी भी इसको बेसिकली 25 के अबव होना होगा टू इंडिकेट दैट इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ। तो फिलहाल तो एक्यूमुलेशन फेज चल रही है, आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस रीच होते हुए प्राइस ऊपर की तरफ गया, एक लिक्विडिटी स्वीप इसने की और फिर नीचे की तरफ हो गया, प्राइस रिजेक्ट होते होते यहाँ पर पहुंचा। फिर अभी ये बेसिकली द जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है इसको सरपास करने की कोशिश कर रहा है। बायर्स आर ट्राइंग द लेवल टू ब्रेक थ्रू द रेजिस्टेंस लेवल ताकि एक नया हाई क्रिएट कर सके, पर द सेलर्स आर नॉट लेटिंग देम हैपन एंड दे आर बेसिकली ट्राइंग टू पुश द प्राइस डाउन। ये हमें क्लियरली इस चार्ट से नजर आ रहा है। ये जो लॉन्ग लॉन्ग विक्स आपको नजर आ रही है ना गाइस, दिस इज वेरी क्लियर in terms of stating that the price is not able to sustain that level। यहाँ पर भी देखो प्राइस किधर तक आया था, 45 तक आया था, पर बायर्स बेसिकली बहुत कोशिश किए पुश करने पर सेलर्स इतने हावी हो गए कि दे ट्राई टू पुल इट बैक। ओके गाइस, इथेरियम पे तो अभी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, बट यू कैन सी क्लियरली Sui is trying to break through the resistance level. Price is getting rejected again and again. It's retesting here.
Hi, Fit India movement. Hi. Can you share me your Telegram community link so that I can add you in my Telegram? Fit India movement. Can you give me your Telegram email address or your phone number? Thank you for joining in. Guys, as and when you enter the stream, I want you guys to share your Telegram IDs, like your basically. I want you to share your Telegram email address or phone number. Anything is okay. Please share it. Fit India movement. I don't know what is your name, but please share your Telegram ID or or your phone number so that I can add you in the community. Are you listening to me, or did you leave? Quit India movement. Quit India movement. Can I know? Can I get your Telegram number or your phone ID? Telegram number or your email ID?
So can you see, इसको मैं थोड़ा सा 15 मिनट्स के चार्ट पे मूव कर देती हूँ. And you can see now a price is trying to retest this zone. This is our demand zone because यहाँ पर मेजर बाइंग्स हुई थी. आप देख सकते हो राइट, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हुई है. तो वो बेसिकली आपका डिमांड जोन है. सप्लाई जोन आपका आप देख सकते हो कि 3.4 के आसपास है, क्योंकि बार बार प्राइस इसी लेवल को रीटेस्ट करते जा रहा है, 4.6 के आसपास. एंड अगेन इट इज रीटेस्टिंग इन दिस लेवल. ये हमारा आज 21 का चार्ट हो गया. यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइस अभी इधर के इस लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है. ऑलमोस्ट जो कल रात में इसने इस लेवल पे किया था, यहाँ से मेजर बाइंग्स हो रही है गाइस. जहां से भी आपको बड़े बड़े कैंडल्स ऊपर जाते हुए नजर आएंगे वो आपके डिमांड जोन्स होंगे. मतलब यहाँ पर प्राइस बहुत ज्यादा डिमांड होता है. ओके, क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखें इस चीज की. अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल उतारूं तो ये आपका क्लियरली डिमांड जोन है. और ये जो लेवल है ना जहाँ पे प्राइस बार बार रीटेस्ट हो रहा है, ये सप्लाई जोन है. ओके, जैसे कि ये लेवल हो गया, ठीक है. सेल ऑफ्स इस लेवल पे ही हो रहा है. दिस इज द सेकंड टाइम जहां से प्राइस ये लेवल पे आपको रीटेस्ट कर रहा है ना. या ये लेवल को दो. अब मैं कलर चेंज कर देती हूँ टू द ग्रीन. सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन है आपका. देखा जाए तो मुझे कलर्स उल्टे रखने चाहिए. आई हैव डन इट रॉन्ग. ओके, मैं इसके कलर्स चेंज कर देती हूँ. ये ग्रीन की जगह इसको रेड कर देती हूँ. Why am I not able to इसका कलर चेंज करना है यार. Why is it not working? Anyways, अभी आप समझ तो गए होंगे. So you must have understood everything. So I want to change the settings though, but I'm not able to do it. So that's okay.
ठीक है, प्राइस यहाँ से सेल हो रहा है और यहाँ से बहुत उठ रहा है, तो ये हमारे सप्लाई और डिमांड यूज हो गया। Guys, I hope this is understood. So your supply and demand zone basically is a very easy to point thing, जहाँ पे मेजर सेल ऑफ्स होते हैं और प्राइस काफी नीचे जाते हुए नजर आता है, दैट इज योर सप्लाई जोन। और जिस जगह पर मेजर बाइंग्स होती है, जहां पर आपको कैंडल्स फुट 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 ऊपर जाती हुई नजर आएगी, वो आपकी डिमांड जोन है, यानी उस पर बहुत सारी खरीदारी होती है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स that you need to understand. Okay, so with that I'm going to take a small 5 to 10 minutes break, guys, and then we'll continue talking about other things that we need to talk about. Meanwhile, please make sure that you download the Zbit app, and also make sure that you subscribe to my channel, as well as hit the bell notification, and also make sure that you are following my Telegram community.
तो आई हैव अ मैसेज फ्रॉम फिट इंडिया मूवमेंट। गाइस आप लोग इतने अजीब अजीब नाम क्यों रखते हो यार? आई डोंट अंडरस्टैंड, आप लोग इतने अजीब अजीब नाम रखते हो। व्हाई डोंट यू कीप इट विद योर नेम्स? आई डोंट अंडरस्टैंड। इट्स इजी टू रेफर टू पीपल लाइक, मतलब ना अगर आप लोग अपने नाम रखोगे तो इट विल बी बेटर फॉर मी टू रेफर यू गाइस बाय योर नेम instead of calling you Fit India Movement. Fit India Movement, you mind telling me आपका रियल नेम क्या है, ताकि मैं आपको आपके रियल नेम से बुला सकूं rather than आपको मैं फिट इंडिया मूवमेंट बोलूं. Such a weird thing to say, honestly speaking. तो जैसे कि आप जानते हैं कि बिफोर गोइंग ऑन टू अ ब्रेक मैं सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में बात कर रही थी, एंड यू कैन सी क्लियरली दैट आई हैव स्पॉटेड सप्लाई एंड डिमांड जोन्स. अभी टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, एक्चुअली इसको मैं ये कलर भी चेंज कर रही थी, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू चेंज द कलर. तो सप्लाई जोन्स एंड डिमांड जोन्स आर नथिंग बट जहां पे भी आप देखोगे कि मेजर मूव हुआ है, जैसे अगर मैं ये जिस एरिया को मैंने मार्क किया, अगर मैं इसको और थोड़ा सा एनहांस करूँ ना, I'll enhance, like I'll make it little more bigger, तो आपको पता चल जाएगा why am I, you know, taking that as a demand zone. आप देख सकते हैं कि प्राइस इधर इस लेवल से has gone to this level, which is like I'm going to show you on the scale. Okay, from here the like without any disturbance in between, प्राइस ने ऑलमोस्ट 5% की जंप मारी है इस जोन में, 4.6%. देन थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ, नो डाउट, थोड़ा सा वापस से रिट्रेस हुई, यानी थोड़ी सी लिक्विडेशन हुई यहाँ पर, बट अगेन इट काइंड ऑफ रीच्ड बैक इट्स लेवल. तो ऑलमोस्ट अगर मैं ये बीच वाले जो डाउन गई है कैंडल्स उसको मैं नहीं भी लेती हूँ ना, तभी भी आराम से 5% लाइक लेती हूँ तो 5.18% की बेसिकली ग्रोथ है, और अगर नहीं लेती हूँ तो बेसिकली इट इज ऑलमोस्ट लाइक 4.6 और समथिंग. सो दिस इज व्हाई आई सेड कि ये जो जोन है ना, ये आपका डिमांड जोन है, बिकॉज इस लेवल पे काफी कुछ बाइंग हुई है टिल दिस लेवल. ओके, मैं इसको अगर और बढ़ाऊं तो इधर तक, पर मैं उधर तक लगा नहीं रही हूँ क्योंकि बेसिकली वहां पर मैं आपको यू नो आई हैव माय अदर थिंग आल्सो मार्क्ड, तो मैं वो चीज को थोड़ा सा हाइड करने के लिए, बट दिस इज वेयर योर डिमांड जोन इज बिकॉज द प्राइस शूटेड एट दैट लेवल वेरी वेरी क्रेजीली. काफी बाइंग हुई है उस लेवल पे. ओके, so this is where your demand zone is. Now coming to the supply zone, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा और एनहांस करूं तो यू कैन सी देयर वाज अ मेजर मूव, और ये मूव कितने का था मेजर करेंगे अगर हम फ्रॉम हियर टिल हियर, ऑलमोस्ट ये 2% का था, 1.94 या 2% के आसपास बोल सकते हैं. ठीक है, मैंने सही से नहीं लिया, एक मिनट. या ऑलमोस्ट 2.06% का मूव था. तो यू कैन सी इट योर सेल्फ, जहां जहां आपको कहीं भी बड़े मूवमेंट्स नजर आएंगे, वेदर द प्राइस इज मूविंग अपवर्ड और इट इज मूविंग डाउनवर्ड, डजंट मैटर, चाहे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, देयर इज some buying, like when the price is going, of course there's buying, and if the price is coming down, it is basically तो आप देख सकते हैं क्लियरली दीज इंडिकेशंस आउट हियर. अभी देखो यहाँ पर भी एक काफी अच्छा बड़ा मूवमेंट हुआ है, तो कैन दिस बी आर नेक्स्ट सप्लाई जोन, कैन दिस बी आर सप्लाई जोन? लेट्स सी ये कितनी इसका मेजरमेंट लेते हैं, कितना बड़ा मूव था, ये ज्यादा मूवमेंट नहीं था, स्टिल इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 1.87, नॉट बैड, अच्छा खासा ही मूवमेंट था ये भी. पर जो डिमांड जोन था, डिमांड जोन इज वेरी वेरी क्लियर, मतलब ऑलमोस्ट 4 या 5% की मार्केट उठी है. तो अभी आप ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि आगे अभी जब मार्केट वापस से
पुल बैक करेगी और फर्दर अगर डाउन होती है तो आपको अभी आपका डिमांड जोन पता चल गया है, राइट? तो हो सकता है कि अभी नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर अब प्राइस जैसे ही यहाँ पर पुल बैक कर रहा है तो इस जगह पर फिर से बाइंग वापस से हिट कर सकती है, क्योंकि ये जोन को फिर से रीटेस्ट कर रहा है। लेट्स सी अगर इसने पिछली और थोड़े दिन में इसने ये जोन को टेस्ट किया या नहीं, अभी हमें पता चल जाएगा। ये तो 15 मिनट्स वाला चार्ट हुआ। लेट मी पुट इट इनटू 4 आवर्स चार्ट एंड सी कि ये वाला जोन फिर से टेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था। यहाँ हुआ था ऑलमोस्ट। ये कौन सा है आप देख सकते हैं गाइस, दिस इज आवर डिमांड जोन। देखो यहाँ पर भी टेस्ट हुआ था, फिर यहाँ भी टेस्ट हुआ है 6 अगस्त को, फिर 11 अगस्त को। तो अभी हमें बहुत क्लियर है, इससे तो हमें बहुत ज्यादा क्लियर है कि वी हैव आइडेंटिफाइड द राइट डिमांड जोन हियर। बिकॉज देखो प्राइस यहाँ जा रहा है, वापस से फिर से उठ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। दिस इज द थर्ड। नाउ अगर ये प्राइस वापस से रीटेस्ट करेगा ना, तो दिस विल रीटेस्ट एट दैट लेवल। एंड बेसिकली आप देख सकते हो वेरी क्लियरली कि प्राइस उस जोन को अभी चौथी मर्तबा रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, दिस इज द फोर्थ टाइम दैट द प्राइस इज ट्राइंग टू रीटेस्ट दैट जोन। ओके, एंड यू कैन सी दिस क्लियरली ऑन द चार्ट। अभी देखो यहाँ पर फिर से वापस से इधर की इस लेवल पे ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये मेजर हमारा बाइंग एरिया है, मेजर बाइंग एरिया है। अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स, अ लॉट ऑफ चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो, वट एवर इट इज, ऑल ऑफ देम बिलीव इस प्राइस को बेसिकली दे आर ट्राइंग टू परचेज इट एट दिस लेवल एंड दैट इज व्हाट इट इज। अगर अब मैं सप्लाई जोन की बात करूं, मैं इसको 4 आवर के चार्ट पे अगर डाल दूं और इसको थोड़ा सा छोटा करके और इसको एनालाइज करूं, तो लेट्स सी के प्राइस बार बार कौन से इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। सी दिस, नहीं, 4 आवर्स के चार्ट पे मैं तो 3.89 को देख रही हूँ, और अगर मैं इसको और थोड़ा सा नीचे करूं तो ये लेवल भी बार बार रीटेस्ट हो रहा है, बार बार रीटेस्ट हो रहा है 3.6 वाला। और देख सकते हो एक दो, मतलब न जाने कितने बार रीटेस्ट हुआ है इस जगह पर। यहाँ से बार बार सेल ऑफ हो रहा है, देखो 3.9 पर सेल ऑफ हुआ, 3.96 पर सेल ऑफ हुआ, 3.96 यहाँ पे भी सेल ऑफ हुआ। ये थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो 3.89। इसको बार बार रीटेस्ट नहीं किया इसने। मैं सिर्फ अगस्त के मंथ को देख रही हूँ गाइस, आई एम नॉट सीइंग अ लॉट ऑफ इट, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस। मेजर यही सेल ऑफ हुआ है, राइट? 3.89 पे। अगर इसको मैं थोड़ा और, ये एक मेरा सप्लाई जोन हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेजर जो सेल हुई है यहाँ पर हुई है इस लेवल पे। फिर नेक्स्ट वाली इधर हुई है, दिस इज अनदर सप्लाई जोन। और फिर थर्ड ये हुई है, दिस इज अनदर सप्लाई जोन जो कि 3.65 पे है। अब ये वाली जोन है जो कि 3.58। तो ये चार मेरे सप्लाई जोन्स हो गए, जहां भी मेजर मेजर सेलिंग्स होती है, मेजर मेजर बाइंग्स होती है। बहुत सारे रेड कैंडल्स फॉर्म होते हैं, बहुत सारे ग्रीन कैंडल्स एक साथ फॉर्म होते हैं। या तो प्राइस फटाक से बहुत ज्यादा नीचे गिरता है, या तो फटाक से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। दैट इज वेयर योर मेजर बाई एंड सेल ऑफ्स आर। ओके, तो हमने देख लिया क्लियरली किधर हमारे बाइंग जोन्स है, किधर हमारे सप्लाइंग जोन्स है।
क्लियरली हमें पता चल गया है। ओके। अभी आपको जैसे ये मेजर सप्लाई जोन्स एंड डिमांड जोन्स पता चल गए हैं, तो आप अपनी बाइंग किधर प्लेस कर सकते हैं, अभी आप सोच सकते हैं। अभी जैसा ये प्राइस बेसिकली 3.38 के आसपास जाएगा, तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, अगर उस जगह पर पहुंचकर अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हुई नजर आए, तो एक एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप कोशिश करें कि ट्रेड अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से नीचे लेने की कोशिश करें, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अक्सर जब भी सपोर्ट लेवल पर खरीदने की बारी आती है, लिक्विडिटी स्वीप के थ्रू आपके स्टॉप लॉसेस को हिट करवाते हैं, तो आपको उनके लॉसेस से कहीं ना कहीं नीचे की तरफ अपना ट्रेड लेना है, ताकि यू डोंट हिट योर स्टॉप लॉस। बिकॉज आपने अगर उनके ऊपर वो ट्रेड लिया, तो आपने उनके ऊपर लिया और आपने अपना स्टॉप लॉस उनके नीचे लगाया, तो वो स्टॉप लॉस को आपके कैसे भी हिट कराएंगे और बेसिकली आप अपनी मनी लूज कर लेंगे। तो ये एक चीज फॉलो कर लें प्लीज।
तो जैसे कि आई वाज टेलिंग यू गाइस के जहाँ भी मेजर रेड कैंडल्स और मेजर ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होते हुए नजर आएंगे ना, दोज आर योर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। एंड अभी 4 आवर्स के चार्ट पे हमने क्लियरली देखा था कि प्राइस बार बार कौन से वाले जोन को टच करते हुए या तो ऊपर जा रहा है या तो फिर कौन से वाले जोन को टच करते हुए नीचे आ रहा है। तो जिधर भी आप देखोगे कि मेजर सेल ऑफ हो रहा है तो वो आपका सप्लाई जोन हो गया, और जिधर भी आपका मेजर बाइंग हो रही है, जैसे इधर ये वाले प्राइस को काफी बार 4 आवर्स चार्ट पे हमने भी टेस्ट देखा कि एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स तो इसने इस लेवल को टच किया है। अब ये अगर वापस से इधर की तरफ बढ़ेगा तो ये चौथी बार होगा जहां पे ये बेसिकली टेस्ट करेगा। ऐसे में कोशिश करना आप कि बेसिकली वेल्स के साथ मूव करने की, ओके, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल बाइंग के साथ अगर अपनी बाइंग रखोगे तो आप प्रॉफिटेबल होने के आपके चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आप इंस्टीट्यूशनल बाइंग को नहीं फॉलो करोगे तो यू माइट बी एट अ लॉस। ट्राई अवॉइडिंग के लिक्विडिटी स्वीप का शिकार ना बने, स्टॉप लॉसेस ना रखें लाइक जस्ट बिलो द सपोर्ट जोन्स, क्योंकि यूजुअली होता यह है कि सपोर्ट जोन्स के पास ही मोस्ट ऑफ द पीपल बेसिकली ट्राई टू बाई, एंड दैट इज वेयर द बिग वेल्स टेक एडवांटेज ऑफ। तो हम छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, हम वहीं पर आकर फूल बनते हैं जहां पर बेसिकली हमने अपना स्टॉप लॉस रखा सपोर्ट के नीचे, और फिर वो लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए वो बेसिकली हमारे स्टॉप लॉसेस को हिट कर देते हैं, एंड दे बाई इट मोर चीपर देन अस एंड दे बिकम मोर प्रॉफिटेबल देन अस। तो हमें उनको अगर हराना है, वेल्स को हमको हराना है, तो हमें बेसिकली सपोर्ट जोन के थोड़ा सा नीचे यू नो ट्रेड लेने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमारा पैसा फंसे नहीं और ना हमारा स्टॉप लॉस हिट होए। ओके, दैट शुड बी अ स्ट्रैटेजी, दैट शुड बी हाउ यू शुड बी ट्रेडिंग। तो जिधर भी आप देखोगे, अगर इस चार्ट को और फर्दर इसको एनालाइज करोगे, लाइक यू ट्राई टू मेक इट मोर बिगर, अगर आपको कहीं पर लॉन्ग विक्स नजर आ रहे हैं तो वो आपको बेसिकली प्राइस रिजेक्शन या नहीं तो लिक्विडिटी स्वीप का इंडिकेशन दे रहे हैं। तो कोशिश करना कि उस जोन्स पे इधर मुझे कोई मेजर किसी भी तो कैडल नजर तो नहीं आ रही है। अभी क्योंकि मैं गाइस आई एम गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन लीनियर रिग्रेशन नाउ। इफ यू सी कि ये मेरा 100 कैंडल का जो लीनियर रिग्रेशन है यहाँ पर, you can see that ये जो upper band है मेरा is acting like support, sorry, acting like resistance, and the lower band is acting like my support. तो what I mean when I'm actually telling you that you should not buy it at support, इधर आप अगर जैसे इधर के पास आप अपना ट्रेड प्लेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ जिन लोगों ने भी ट्रेड प्लेस किया होगा, they would have hit the stop losses here, and this long wick is indicating that only। यही चीज को मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। जहां भी आप सपोर्ट के नीचे कोई लॉन्ग विक देखोगे या रेजिस्टेंस के ऊपर कोई लॉन्ग विक देखोगे, ये लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रन का एक इंडिकेशन है। जो तो जिन्होंने भी इस जगह पर जब ये सपोर्ट के लेवल पर रीच कर रहा होगा, यहाँ पर किसी ने खरीदारी की हो तो उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए, और वेल्स ने यहाँ तक स्टॉप लॉसेस लेकर यहाँ से खरीदारी करके प्राइस को इतना लंबा बढ़ा दिया। तो आप समझ रहे हो कि कहाँ हमको ट्रेड लेना है। रेजिस्टेंस पे देखे, सेलिंग जब करनी हो वो तो आपका टोटली अपना कॉल है, सबका अपना अपना मर्जी की बात है कि वेयर डू यू वांट टू प्लेस योर प्रॉफिट। some people like to take at 1%, 2%, 3%, 4%, whatever works for you, take the profit at whatever level you like। but coming to buying, long buy जब करते हैं, ओके ओके सॉरी,
क्या भी आप देख सकते हो। तो जहां भी आप देखोगे कि बेसिकली प्राइस इज ना मूविंग, price is moving in below the support and above the resistance। तो बिलो जब होता है तब कोशिश करें, एंड आरएसआई पे भी ओवर एग्जॉस्शन लेवल को लाइक एंटर होने दें, लाइक पहुंचने दे उसको 30 एंड बिलो, यानी 30 एंड बिलो, 20 एंड बिलो, 10 एंड बिलो, जो भी हो सकता है करें। ओके, क्योंकि अभी प्राइस रिग्रेशन लाइन के आसपास आप देख सकते हो कि वो फिलहाल इट्स इन accumulation phase, it is moving in sideways right now, better to avoid such situations। Anybody in the stream would like to ask me any questions, you're welcome to do so।
Trend is strong, selling pressure is high, buying pressure is low. So as you can see, the price is trying to retest the demand zone again. Once it reaches that level, we might see some major movements. Guys, whoever is joining the streams, I want you to basically share your Telegram community. Sorry, share your Telegram IDs actually, so that I can add you to the Telegram community. Share your Telegram IDs, guys, if in case I can add you to the Telegram community. Just a sec. Guys, can I request you to share your Telegram IDs, whether it's your Telegram email address or Telegram phone number, both are okay, so that I can join you to my community. I want you guys to join my community, जहाँ पे मैं आपके साथ मार्केट की सारी दूसरी इंफॉर्मेशन शेयर करती रहूंगी. कोई बाय और सेल सिग्नल्स होंगे ड्यूरिंग द डे, I can keep sharing that. Join my community so that I can let you know. Share with me, guys, on the chat your Telegram ID, email address, or your phone numbers. Both are okay.
अभी राइट नाउ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज नॉट द आइडियल पोजीशन दैट आई वुड लाइक टू टेक। ये मेरे लिए एक आइडियल पोजीशन नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि प्राइस जस्ट हिट दिस लेवल एंड हैज you know again gone up. While this is being part of the supply demand zone, definitely, but I would still not buy it at this level, because I'll show you the reason why I'll not. क्योंकि एक तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि on my DMI, my DI plus is basically below 25, which is indicating my buying pressure is very weak. Trend is strong, no doubt, but I would not buy it at this level, because मैं अभी इसको close करके I will open my RSI here, okay, and I'll show you. RSI is basically near the neutral zone. Can you see here? यहाँ पर ये जो अगर इस समय पे हम बाय करते तो basically our RSI was at 36.11, because it didn't reach its over exhaustion level. I would have never bought it at that level. अगर मुझे लॉन्ग पोजीशन लेनी होती तो मैं इस जगह पर पोजीशन नहीं लेती, क्योंकि वो ओवर एग्जॉस्शन पर नहीं पहुंचा है। आई वांट इट टू रीच ओवर एग्जॉस्शन, क्योंकि मुझे पता है वहां से फिर प्राइस ऊपर जाना ही जाना है। अभी ये बीच से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई भी फेक ब्रेकआउट आएगा और प्राइस फिर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, तो फिर हमारी तो मतलब बाट लग गई है। यहाँ पर वी आर बेसिकली डूम्ड. So I would never take a position here. I would want the price to reach the over exhaustion level. ओवर सोल्ड पे आ जाना चाहिए, तब जाके जब उसका रिवर्सल होगा तब मेरा सही से प्रॉफिट बनेगा। तब मुझे पता है कि मैं जब लॉन्ग लूंगी तो मेरा प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। ओके।
So guys, whatever I'm talking about, I hope this is making some sense to you. Still, we haven't got any kind of right buying position in SUI. Ethereum, let's just check Ethereum also, because I don't like myself particularly taking positions in between or near the neutral zones or near the 50 mark zone on the RSI or near the regression lines. I personally prefer price going down. This could have been a buying position for us, but as you can see, the next candle kind of gave us a fake breakout. There has been a liquidity sweep here, and this could have been a buying position for us. I think I was actually at that point in time, maybe I was watching Sui at that time. This could have been a long buying position. We didn't see Ethereum from that time, right? So this could have been a buying position. But in Sui, we didn't get still any kind of good position. This candle could have been a long buy position. And yes, this is our short. This is clear here. This is short.
Here we got a short, but we didn't get any buy still, guys. I don't recommend you buying when it is in between the bands. I prefer you buying either it is touching the support zone or it is touching below the zone. That is where your buying position can be. This could have been a buying position, but because here there has been a liquidity sweep that has happened, but still that could have been your buying position. But nowhere here, guys, nowhere over here. Okay. Any questions for me? You guys are welcome to ask me. I'm okay to answer to any of your questions.
But nowhere here, guys. Nowhere over here. उसकी इंफॉर्मेशन देता है, कौन सा ट्रेंड है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, बट इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन हाउ to basically follow whatever we are discussing here. So what suits you best is what you're going to decide, what is good enough for you to start your crypto journey. So
So we haven't got any kind of, we got one long, one short position. So far the price has not reached the support zone. So we will, until it reaches any other support zone, then we will have another long buy position. So today also was a good day. We got some good positions while I was toggling between the two screens. I think I was not able to get the positions at the right time. I shouldn't be analyzing two cryptos at one time, I guess, because of which this confusion is happening. Otherwise, I would have given the signal as and when it has happened. But nevertheless, tomorrow is the day when we basically again meet up at 4 to 8 Dubai time. So if you have any queries, any questions, any doubts, any problems, anything, you can reach out to me directly on the Zbit live stream, or also you can reach out to me on the Telegram community. Make sure whenever you join the stream, share your Telegram community ID or phone number so that I can join you in my community and continue to give you all the required information that you need. So guys, all the information which is shared in these sessions are all for information and education purpose. So please do your own research before you get into this industry, because crypto markets are highly volatile and anything can happen in a day and you can lose out on all money if in case you take wrong decisions. So be careful when you invest. Take care of yourself. I will see you tomorrow between 4 to 8 p.m. Till then,